from this absolute madness to this new monstrosity. तो प्लान अभी हाल ये है कि यहाँ पर वाइनल रैप कर लेंगे एंड इस एरिया के बाद में यहाँ पर भी अंदर वाइनल रैप कर लेंगे एंड ओवर हियर यहाँ से स्टार्ट करेंगे. दिस विल गो ऑल द वे अप टू हियर. उसके बाद दिस विल बिकम वाइट एंड दैट विल बिकम वाइट. इट विल लुक गुड फॉर श्योर. यहाँ पे कलर करने वाला हूँ अभी हाल. आई एम ट्राइंग टू फिक्स सम पेपर ओवर हियर सो दैट पेपर लगाने के बाद आई कैन बेसिकली इजीली जस्ट पेंट इट आउट सो दैट पेंट कहीं और ना जाए, सिर्फ जहाँ लगाना है वहीं पर जाए. आज है डे नंबर 2 एंड आज होने वाला है काम ऑफ द फ्रंट पैनल. यहाँ पे I'm gonna put some vinyl wrap at the top area and also at the bottom area. Let's do that. तो फिर कुछ इस तरह से बन गया मेरा कैबिनेट फ्रॉम अ ब्लैक कैबिनेट इनटू अ ब्लैक एंड वाइट थीम वाला कैबिनेट. सो आई थिंक इट लुक्स गुड. अब रह गया था काम, वो था इंस्टॉलेशन का. तो बिना किसी देरी के लेट्स एंजॉय द मोन्टाज ऑफ मी बिल्डिंग द पीसी. लेट्स गो फॉर दैट एंड देन वील वाइंड इट अप. तो इस तरह से मेरा कंप्यूटर अब रेडी था एंड द थीम वाज ब्लैक एंड व्हाइट कलरवे. यानी कि सारे के सारे जो कंपोनेंट्स थे या तो थे वो ब्लैक कलर के अंदर या वो थे व्हाइट कलर के अंदर एंड इट वाज प्रिटी SICK. इसके अलावा जो काफ़ी एसेंशियल पार्ट था इस कंप्यूटर बिल्ड का वो थे स्लीव्ड केबल्स एंड दैट वाज गिवन टू मी बाय tweaked PC. So in case anyone wants to buy some sleeved cables, check out their page on Facebook. तो अगर किसी इंसान को परचेस करना हो sleeved cables, you know where to buy those things. Link in description of tweaked PC. अब शुरू करते हैं वीडियो को on a different perspective, यानी कि enjoy करें B-rolls को. I would like to end the video over here. And with that said, I would like to say one more thing. कि even though my computer looks completely like a stormtrooper, I would like to name it DARTH SIDIOUS.